Good morning, students. In last session, we have seen partnership basics account. So, chalo, jaldi se we will quickly revise all basic entries partnership did if silent. So, before starting any session, first I will recall basic rules of accounts. Debit the debtor, credit the creditor is a personal rule, traditional approach. Real account, debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real account debit what comes in, credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So these are rules of accounts for traditional approach and modern approach. Asset debit balance, liability credit balance, expenses debit balance, income credit balance, and capital account credit balance. Friends, in last session we started with the partnership. Partnership accounting is nothing different than your basic sole proprietor accounting, but we have to see some changes in partnership account, like interest on capital, interest on loan, such type of interest we have to pay, and we have to distribute profit among partners in the profit sharing ratio. So that is very important, and that talks about if partnership deed is silent. So partnership deed silent hota hai to aap kya karoge? So profit or losses you have to share equally. Interest on capital you will give no interest on capital. In case of interest on drawing, no interest on drawing. Interest on loan at the rate of 6%, and salary is not payable to the partner. And interest and salary, if you have profit, then you can pay, but normally it is not payable in if partnership deed is silent. So it's always better to maintain your partnership deed. After that, we have seen some pro formas of capital account. If you remember, capital account is a credit balance, credit plus debit minus, by balance brought down, by cash if additional capital is being introduced, by P&L account if profit is transferred, by general reserve, by salary commission remuneration, by interest on capital, by liabilities which are taken over, by balance carried down is the last one. To balance brought down if balance is advance balance is there, to profit is transferred, to cash if drawings are there, to interest on drawings, and to asset if it is taken over, and to balance carried down. See beta, this entries are very, very important. So I will quickly take your test of 3 questions. So I'm going to ask you 3 questions quickly. And if you are ready with this, my session, first you have to answer these 3 questions. So it's very simple. It's related to partnership only. Okay. I'm going to ask you 3 entries. So this is warm up फॉर यू. सो जल्दी से आज का वार्म अप चालू करते हैं 3 एंट्रीज के साथ. आई नो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी किए रहेंगे, तो इट्स बेटर. सो ऑलरेडी यू सॉल्व some illustrations. Good morning, good morning, good morning, good morning to all of you. Fast beta, Neha Kumari, Aditya ji, Sagar, Chal, Pratik ji, Zeba, Shivangi, Ronit. Yes, good morning to all of you, beta. Remaining students. Yes, Ishan bhi पूछ रहे sir, illustration 5 or 6 explain कीजिए. Yes, beta, we will explain it, but before that, in first half we will see some basic entries regarding goodwill, and in second half we are going to take illustration parts. Okay, so beta, आज का session आप आज अभी रोज मैं 5 दिन आपके साथ रहने वाला हूँ, नेक्स्ट वीक में भी आपके साथ रहने वाला हूँ, तो ये पूरे 10 दिन हम लोग एंजॉय करने वाले हैं और साथ में बहुत ज्यादा स्टडी करने वाले हैं. एंड यू प्रॉमिस मी, अभी पार्टनरशिप के टाइम पे आप रोज apart from your class timings you have to devote 2 hours apart from your class timings for partnership. Okay, because partnership is important chapter not only from foundation point of view, but it is important from inter point of view. In advanced accounts also you have partnership, so please don't keep this chapter in option. This is a request to all of you beta. So ये एक chapter को बिल्कुल भी option में मत छोड़िए. Okay, चलो, good morning बेटा. Very good बेटा बीबू पांडे, थोड़ा लाउड बोलिए. ओके, लाउड तो है ही बेटा. आप आपका माइक के सॉरी आपका वॉल्यूम एडजस्ट कीजिए बेटा. आज का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा रहेगा. चलो तो शुरू करते. Question number 1. Are you ready, guys? So number 1 पे I'm not going to take other names beta. First one, interest on drawings. So जल्दी से मुझे बताइए what is the entry for interest on drawings. In last session I already explained you that interest on drawings is related to partner and therefore it is transferred to P&L appropriation. So you must know the difference between P&L account and P&L appropriation. Partner related income and expenditures are transferred to P&L appropriation. Okay, so P&L appropriation में हम लोग transfer करते हैं partners related all expenses and incomes. So what is the entry for P&L appropriation? जल्दी से मुझे बताइए सर. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री जल्दी से मुझे बताइए. फास्ट 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 जल्दी बताइए, फास्ट भागिए.
यस बेटा सौरभ, डोंट वरी, थेरोटिकल फ्रेमवर्क की क्लास बची हुई है, यूनिट्स कब लोगे तो ये रिकॉर्डेड में मिलेगा बेटा, बिकॉज बहुत ज्यादा कम सेशन होने की वजह से आपके कुछ सेशंस में रिकॉर्डिंग में दे दूंगा और ये जल्दी से आपके तक पहुंच जाएंगे, डेली बेसिस पे मैं आपको पहुंचा दूंगा। ओके ओके चलो सर, तो फर्स्ट एंट्री आपको मिल चुका है हमें अनुष्का अग्रवाल जी से, बहुत बढ़िया, इन्होंने एंट्री लिख दिया है। इस बार सीआरओ ने बाजी मारी है और सीआरओ स्टूडेंट इस बार एंट्री करते हुए दिख रही है आपको। खुशदीप कौर थोड़ा सा बेटा एनआरओ होने के वजह से, और बेटा आपने एंट्री बराबर नहीं बताई। और मानवी खन्ना, आप हमेशा गलत एंट्री क्यों बोलते हो बेटा, कैपिटल को डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिकॉज ये हमारा इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि पार्टनर पैसा निकालते हैं तो हमारी फर्म उनको इंटरेस्ट चार्ज करेगी, एंड दे विल, आवर फर्म विल चार्ज इंटरेस्ट टू आवर partners, and for firm it is income. So interest on drawing will is income, and partners are debtors for us, because partner will pay us, so they are our debtors. So partner capital account debit to interest on drawing, sir, to interest on drawing. So capital account debit to interest on drawing, and then this interest on drawing is transferred to P&L appropriation. So P&L appropriation में next entry क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, इसका बैलेंस जीरो होएगा, बैलेंस जीरो होगा, एंड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ये आपकी सेकंड एंट्री होगी। वेरी गुड सर, वेरी गुड। सो कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो जिन्होंने भी गलत एंट्रीज बोली थी, यस जल्दी से रेक्टिफाई योर एंट्रीज एंड सेंड इट टू मी वंस अगेन। सो दो स्टूडेंट्स हु आंसर्ड रॉन्ग, तो बेटा आपको जल्दी से वापस, यस रीसेंड योर आंसर, रीसेंड दोज हु आर रॉन्ग। No problem, beta. Manvi is telling, sir, I will improve. No, beta, it's very simple. You just apply the logic and you'll get the answer, beta. Manvi, इतना क्यों आप टेंशन लेती हो? Okay. चलो, next one. Next entry आपके सामने आ रही है. Next entry is simple entry, salary. Salary which is payable to partner. Salary which is payable to partner. I don't want a single student who answered this entry wrong. Okay. So salary to partner बेटा फटाफट फटाफट फटाफट, गुड मॉर्निंग बेटा समीर सिंह, फटाफट आ जाइए और जल्दी से क्विज में भाग लीजिए। जिया पटेल ने आंसर दिया, ईशिता सेट्टी ने वापस से आंसर दिया। आई थिंक इफ यू आंसर रॉन्ग, प्लीज प्लीज री आंसर इट। चलो वेट कर रहा हूं मैं आपके टाइपिंग के लिए। सोनाली गावड़े आ चुकी है और सबसे पहले लक्षिता। सीआरओ, इस बार क्या सीआरओ ने ठान ली है कि बस लास्ट टाइम हमने आंसर नहीं दिए थे, इस बार सीआरओ ही सीआरओ रहेगा। वेरी गुड। सो सैलरी अकाउंट डेबिट to partners capital account. Very good, beta. Salary account debit to partners capital account is the second entry. Salary account debit to partners capital account. Salary account debit to partners capital, because it's an expenditure and it is payable to partner. So partners are our creditors. We have to pay them and we have to pay them. Therefore, their capital account is credited. Okay. So got the concept. And second entry will be P&L appropriation account debit to salary account. So there are two entries and the salary is transferred to P&L appropriation. Beta Srinidhi, you answered it, but this answer is a second one answer. Second one answer, beta. Third one. I am waiting for the third entry. Yes, this time many students answer it correctly. Last entry will be interest on loan. Now this is very simple entry, interest on loan. Think logically and answer it fast. कन्हैया ने तो सिर्फ सैलरी अकाउंट को डेबिट दिया पर किसी को क्रेडिट ही नहीं दिया। कन्हैया जी क्या कर रहे हो, ओनली डेबिट, देयर इज नो क्रेडिट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बेटा, इट इज डिफिकल्ट। सो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन सर, थर्ड एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन लोन सर, फटाफट बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन। चलो इंटरेस्ट ऑन लोन, इस बार के तीनों विनर्स सीआरओ रहना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। लास्ट टाइम सीआरओ कहीं पे भी नहीं थे।
This time Arun Chauhan ji. Arun Chauhan, NRO. Interest on loan account debit to partner's capital account. Interest on loan account debit to partner's capital account. Interest on loan is our expenditure. So interest on loan is debited and partners are our creditors. So we have to give credit. Chalo, warm up over. Yes, everyone now quickly revise unit number 1, P&L appropriation and P&L account. What is the difference? P&L appropriation account is partner related. And remember, P&L account is related to normal expenditure and income. So whatever partner related expenditure and incomes, that we transfer it to P&L appropriation account. It's very simple that we have seen in the last session some important entries. Now I'm going to start with this problems. Yes, फटाफट देखिए अभी एक ही minute. Now we are going to start with first unit number 2. What are Goodwill entries? Okay, so पहले हम लोग Goodwill आज समझ लेंगे in first half, and then second half I will give you some problem के लिए, exercise के लिए, कुछ answers के लिए time. तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस आफ्टर 12 देखेंगे, और अभी हम लोग पूरा गुडविल कंप्लीट करेंगे. ठीक है, पूरा गुडविल हम लोग कंप्लीट करेंगे अभी. पूरा गुडविल कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, एक ही सेकंड, थोड़ा माइक चेकिंग चालू है, एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी. आवाज अच्छे से आ रहा है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. यस, वॉल्यूम इज ऑडिबल. ऑडिबल है ना बेटा? वॉल्यूम फटाफट बताइए. यस, okay. So now please understand goodwill adjustments. Now this is the heart of partnership account. Okay, partnership accounts का heart क्या है? Yes, volume is low बोला था, but now it's clear. Everyone is saying sir you are audible, properly audible है. तो चलो heart of accounts आज समझने की कोशिश करते हैं. What is goodwill? Goodwill adjustment is always there in your entries. Okay, so now first I am going to ask you some questions. So see, now today we are going to change the scenario. Okay, today I'm going to ask you some questions. First you will answer it. First you will apply your mind. Yes, you think it, and then we are going to start. Okay, so first one, tell me. First one, goodwill entries में. चलो, goodwill entries में first one, tell me. Suppose if there is admission of partner. If there is admission of new partner, but obvious, old partner will say, we earned our name. Goodwill means what? It's a reputation of the firm. Okay, so it's a brand that you develop over years. Okay, suppose if I started a business, now suppose if I started my coaching classes with ICI. Okay, so ICI has its own name, no problem. ICI का अपना एक brand है, but ICI coaching class ये डेवलप होने को बेटा देयर आर 5 to 6 years. हमारी मेहनत लगेगी, सब फैकल्टीज एकदम जोर शोर में पढ़ाएंगे, बच्चे का रिजल्ट आएगा, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी, तो आईसीआई का रेपुटेशन जो है क्लासेस के लिए वो और अच्छे से बढ़ेगा. सो इट विल बी गुडविल फॉर द आईसीआई. ओके, तो गुडविल मतलब क्या? गुडविल मतलब ये जो बच्चे पूरा डिपेंडेंसी होंगे, और सपोज आईसीआई ने फीस भी चार्ज कर दी, एज्यूम करो आईसीआई ने फीस भी चार्ज की है, तो अब स्टूडेंट्स आर रेडी टू टेक दिस पेन ड्राइव्स एंड ऑल गूगल ड्राइव सेशन. व्हाई? बिकॉज इट्स अ रेपुटेशन ऑफ दैट फैकल्टी ऑल्सो एंड फॉर आईसीआई ऑल्सो. आईसीआई इज गिविंग बेस्ट सर्विस फॉर दैट, सो दैट इज अ गुडविल. ओके, सो सपोज if ICI का example छोड़ दीजिए. Now I am telling you one example. If I started my business with my friend, suppose one hotel where one restaurant we open,
We created one brand. Okay, we created one brand. Suppose संकेत सर का ये है, संकेत सर का ढाबा, ऐसे हमने ओपन किया. Okay, संकेत सर का ढाबा. So Sanket sir dhaba, and suppose there are two partners, Sanket sir and Nikhil sir. And Pritesh sir wants to enter into this partnership firm. Assume Pritesh sir, after 5 years, he wants to enter into the partnership firm. So Sanket sir and Nikhil sir is telling that you have to pay something. Pay something extra other than your capital share. So other than your capital share, you have to pay some extra amount, and that extra amount is nothing but that pay something extra. This pay something extra is nothing but it's a goodwill share. What is? It's a goodwill share. So but a goodwill share means what? It is an extra amount apart from your capital share. Okay. So capital, Pritesh sir will bring some capital. But apart from that capital account, he brings some extra amount. Okay, sir, got the concept. Now capital. So Pritesh sir will bring two amount. Own capital and excess amount. What is decided by partner. Now this is how to decide this excess amount, and for that we need goodwill valuation. Okay. So now this excess amount, whatever Pritesh sir, now this capital amount will be retained in the business. Business will retain it. Who will retain? Business will retain. Sir, see, understand the concept of goodwill logically. What is exactly goodwill? Don't try to pass entries directly. Okay. So first understand the concept. So Pritesh sir will bring capital account plus that excess amount. And that excess amount is called as goodwill share. What is called as goodwill share. And who will take this? Who will take this? Yes, now you only answer it. Apply your 12th standard logics and how this goodwill is shared by whom? Yes, who are partners? Who are partners? Okay, Sanket sir, Nikhil sir, and Pritesh sir. Now, Pritesh sir is a new partner, and who will share this amount? So Pritesh sir will bring this amount and will be shared by, yes, whom, and in which ratio? चलो जल्दी से बताओ. सर, मानवी खन्ना ने आंसर दिया. Sir, incoming partners, sacrificing partners. Very good, beta Manvi. So this excess amount, what is the entry, Manvi? Now think logically. What is the entry? Chalo. What is the entry that you are going to pass? Now think logically. Fast. So entries are wrong entry, beta Samir Singh. Wrong entry. Yes, it's okay. 11, 12 standard is totally different, beta. Okay. So just want to develop your thinking first. Old partners. Yes, old partners in sacrificing ratio. Very good. Usman Muhammad ने आंसर दिया. Sir, Sanket sir will and Nikhil sir will share that partnership amount. Now goodwill share. Very good, beta. This will be shared by all partners. Who are all partners? Sanket sir, Nikhil sir. So Sanket sir and Nikhil sir will share this amount in their sacrificing ratio. Oh, got the concept, sir. Sacrificing ratio. So who will share? All partners will share. Sanket sir and Nikhil sir will share this amount in sacrificing. So sacrificing ratio. Many problems we are going to solve. But yes, once again, I will tell you what is sacrificing ratio. Sacrificing means Sanket sir. Here there are three partners. Sanket sir, Nikhil sir, and Pritesh sir.
old partners, Sanket sir, 3/5, 2/5. Okay. Now new ratio is 1:1:1. Let's understand it quickly. So 1/3, 1/3, 1/3. Now previously there were 5 chocolates. कितने chocolates थे? 5 chocolates. So 5 chocolates में से 3 किसके पास थे? Sanket sir. So Sanket sir has 3 chocolates out of 5 and Nikhil sir has 2 chocolates. Now in new case, 1/3, 1/3, 1/3. So their bases are not same. So first one, in mathematics we have to do their base equal. उनका डिनोमिनेटर मुझे इक्वल करना पड़ेगा, अदरवाइज प्लस माइनस नहीं होएगा. सो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे आई विल मल्टीप्लाई बाय 5 to make their bases equal. So sir, 9/15 and this is 6/15 multiplied by 3. So to make base equal, and this is 5/15, 5/15, and it is also 5/15. Now you can check 9 chocolates Sanket sir previously had. Okay. Make denominator equal and then do the calculation. So out of 15, 9 chocolates with Sanket sir, and now he has only 5 chocolates. So he sacrificed 4 chocolates for Pritesh sir. Okay. So out of 15, he sacrificed. Okay. So this is sacrificed by Sanket sir. Nikhil sir's sacrificing is, yes, beta, he sacrificed 1 chocolate and then Pritesh sir got 5 chocolates. Sir, so what is the sacrificing ratio? So sacrificing ratio is 4:1. And in this ratio, not in old ratio, not in new ratio, but whatever amount brought by old or new or sacrificing ratio, not in old ratio, whatever amount brought by Mr. Pritesh in excess than capital account. Okay. So जो भी amount excess में लाया है, वो amount हम लोग sacrificing ratio में divide करेंगे. And this is how पार्टनरशिप अकाउंट्स लुक लाइक. ओके. सो पार्टनरशिप अकाउंट्स में सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी ये एंट्रीज फॉर गुडविल. जिसको गुडविल समझ में आया ना दोस्त, उसको पूरा पार्टनरशिप समझ में आया. बिकॉज पार्टनरशिप में नथिंग एक्स्ट्रा देन दिस पार्टनरशिप अकाउंटिंग में गुडविल एडजस्टमेंट. सो बेटा, न्यू पार्टनर brings 2 amounts. See, I want you, every one of you will write it in the comment section. This is very important. I want to know your understanding level. So whatever I am talking about, please summarize it and write it in the comment section. Wait, first I will revise it. Okay. So let's see how many of you can write it in the proper way. What is your understanding? See, in accounting course, in CA course, first understand the concept and make it summarize what this concept talks about. Once you are clear with the concept, then beta, it's nothing difficult in this course. But students, they are not trying to understand the concept, but they are by heart this concept, and that's why you are finding this very difficult. Whenever I'm making any concept simple, first thing what is come to my mind, I directly never start with that goodwill entries. See, goodwill entries is the second part, but first you have to understand why this, sir, why this. You ask to yourself, why we are passing goodwill entries? So goodwill entries because Pritesh sir is contributing some extra amount. Pritesh sir is giving some excess amount. He wants capital. He wants share. Okay, beta, share चाहिए, capital मिल जाएगा. Capital amount that will be retained by the business. But what is the sacrifice made by the old partners? They created them, so they must get something extra. Business will get capital amount. Business क्या लेगा? Business will take capital amount. But that excess amount which is contributed by Pritesh sir, it is not taken by business. This amount will be shared by all partners in sacrificing ratios.
That excess amount, that is a goodwill share. And that goodwill share will be contributed by Pritesh sir and will be taken by Sanket sir and Nikhil sir in sacrificing ratio. Sir, now you are clear with this concept. Sir, difficult है, but Sanket sir ने बहुत easy कर दिया इसको. Okay, so capital amount is retained in the business and that excess amount will be shared by partners in sacrificing ratio. So what is sacrificing? It's nothing but old minus new. Old minus new is called as sacrificing. Okay, and to make the denominator equal and then do the calculation, take the sacrificing ratio. 4:1 is a sacrificing ratio. So that amount is not shared by old partners or new partners in old ratio or new ratio, but it is in sacrificing ratio. So new partner will bring the amount. एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो. बिजनेस में रखना नहीं है. Pritesh sir will bring the money. So Pritesh, so what is the entry, sir? What is the entry? Pritesh is our debtor. Pritesh is our debtor. So बेटा डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप अप्लाई बेसिक लॉजिक वही आने वाला है. Pritesh is our debtor and Sanket sir and Nikhil sir are our creditors for business. For business, business को कुछ नहीं मिलेगा. बिजनेस को कुछ भी नहीं मिलेगा. बिजनेस क्या करेगा? एक हाथ से प्रीतेश सर से पैसा लेगा. सर गुडविल का पैसा एक हाथ से लेगा और दूसरे हाथ से किसको देगा? संकेत सर एंड निखिल सर. बस खत्म हो गया गुडविल कॉन्सेप्ट. एंट्री समझ में आई? तो हाउ टू कैलकुलेट गुडविल इज द नेक्स्ट पार्ट. सर हाउ टू कैलकुलेट दिस अमाउंट? यस, वेट फॉर सम टाइम. सो फर्स्ट यू अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट. प्रीतेश सर एंड निखिल सर क्या करेंगे? सॉरी, निखिल सर संकेत सर पैसा लेंगे और वो क्या करना है? यस, चलो लेट्स सी now who is explaining this in very well manner. Okay, जो भी मैंने explain किया, I am giving you 2 minutes 3 minutes to recall this and note down in your comment section. Comment section में कितने बच्चे इसको लिख पाते हैं देखते हैं. चलो मेरे students, I know if you are wrong then I will rectify you, but you have to write it, you have to summarize it in your either in Hindi or in English. Okay, other language Marathi चल सकता है, गुजराती भी चलेगा, but other languages are not important. Okay, वो आती नहीं है मुझे, not important है, sorry, are not getting by me. Okay, okay.
दिवेश आंसर इट वेरी वेल। हाँ बेटा, दिवेश मस्त आंसर दिया बेटा, बहुत बढ़िया। दिवेश ने लिखा है एवरी न्यू पार्टनर विल ब्रिंग टू अमाउंट्स, कैपिटल एज पर ही, कैपिटल एज पर शेयर, जो भी कैपिटल होगा, एन एक्सेस अमाउंट कॉल्ड गुडविल। Capital will be retained by the firm, very good, and excess amount is shared by all partners in sacrificing ratio, old minus new ratio. Very good बेटा। सबसे बढ़िया दिवेश ने लिखा था, और इतना प्रॉपरली लिखा हुआ था दिवेश ने। ईशांत ने, a new partner brings his share of capital and excess amount, which is called goodwill share of new partner to admit in partnership, and this goodwill will be shared by all partners in sacrificing ratio, and this sacrificing ratio is nothing but old minus new. ईशान मस्त लिखा है बेटा। Bhumika, at the time of admission, new partner will bring some excess amount in addition to his capital. That excess amount will be divided between all partners in sacrificing ratio, and because they are sacrificing some ratio in the favor of new partner. बहुत बढ़िया। सागर ने भी लिखा है, वेरी गुड। श्रुति ने भी लिखा है। दर्शन बहुत सिंपल और 2 लाइंस का लिखा है। श्रीनिधि वेरी गुड बेटा। Yes, now I won't read all these answers, but yes, many students have written, sir, can you summarize all ratios in an instant? Sir, I have been late today a bit because of Wi-Fi issue. No, beta, because already it's a very big chapter. So please don't tell me to revise it again and again. It's very difficult. So it's very simple, beta. That new partner will bring the 2 amounts, and first amount is that the capital amount, and second will be goodwill amount. Capital amount will be retained by the business, and goodwill amount will be shared by the new partners in the sacrificing ratio, sir. So it is what is the amount admission entries all talks about. And now the question is, now the very simple question is that excess amount, goodwill share, how to calculate? So that goodwill amount, how to calculate that goodwill amount? Please, can you explain it in detail? So goodwill amount, how to calculate? That is the next question. So it's very simple, that goodwill amount calculation. And for that, we have to understand. Yes, but should I show you directly PPT? Or should I tell you stepwise, or should I improve your answer? Thinking stepwise. Can you tell me whether you want this stepwise thinking or whether you want to see PPT directly? Yes, tell me in the comment section. Fast, fast, fast. आपको ऐसा ही समझ में आ रहा है या PPT वाइज समझ में आता है ज्यादा बेटर? तो आप लोग मुझे बताइए. So accordingly I will show you. Okay. So स्टेप बाय स्टेप में आपका थिंकिंग डेवलप करूं या डायरेक्टली PPT बताऊं? जल्दी से बताइए. यस बेटा. बेटा केशव नहीं, बेटा केशव थोड़ा सबर कीजिए. आई विल टेल यू ऑल दीज एंट्रीज. सो फर्स्ट आई विल इंप्रूव योर थिंकिंग एंड देन आई विल टेल यू दिस ऑल योर क्वेश्चंस. चलो बेटा फास्ट मुझे बताइए 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 बताइए. स्टेप वाइज पीपीटी डायरेक्टली. अनुष्का अग्रवाल बोल रही है पीपीटी बताइए. ओके. मैक्सिमम आंसर स्टेप वाइज. तो स्टेप वाइज आंसर ही जाएंगे स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. तो गुडविल अमाउंट. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यस, पीपीटी आई विल टेक इट एज रिवीजन. ठीक है, पीपीटी हम लोग रिवीजन करके रखेंगे एंड दिस इज द प्रोसेस वी विल डेवलप इट. ओके. सो गुडविल अमाउंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर हाउ टू कैलकुलेट गुडविल? ओके. सो नाउ गुडविल is a big question, sir. So there are 2 ways to understand goodwill amount. 2 ways to understand goodwill amount. So how to calculation is very difficult. See, goodwill is not the exact amount. No, this is not the exact amount. Goodwill is always estimated and agreed by the partners. Okay. For example, suppose I have one ice cream
without having any branding. Okay, so for example, suppose मेरे वाइफ ने ही एक आइसक्रीम जो है वो फ्रिज में रख दिया और हमने एक आइसक्रीम खाया, मैंने और उसने, सो इट विल कॉस्ट मी समथिंग अराउंड ₹20 or 25. But at the same time, suppose if I'm eating Amul's ice cream or Dinshaw's ice cream, so beta I'm paying ₹100 for that ice cream. Why we are paying extra? Because it's their branding. Some ice cream is costing me ₹60. Natural का तो one scoop इतना महंगा आता है sir. So this ice cream they are charging extra amount because of their brand names. Okay, so we are paying it. Why we are paying it? Because we want to eat that ice cream. Okay, so therefore we are not paying exact amount, but this is the agreed amount between two partners and old partners and new partners. Okay, तो मुझे इससे क्या बोलना था कि this is estimated amount. This is not the exact amount. Okay, so this is not the exact amount, but this is estimated amount. Okay, so goodwill is nothing but you are paying extra. Okay, goodwill is nothing but you are paying extra amount. Now goodwill is depending on two. Yes, you can see here that there are two ways to calculate goodwill. Number of years of purchase. Now this is very difficult calculation. So number of years of purchase, it's given and it's not given. See beta, those students who are not attending in live session, this accounting, पार्टनरशिप बाद में देखना, बहुत आप आंसर क्वेश्चन करोगे ना तो आपको मजा आएगा. You participate in this question answer format. Otherwise it will be little bit boring part after watching, after in recorded session. So I say is providing you is only because you have to interact. That's why we are taking these live classes. Yeah, it's not actually affordable for us. For you, it's always affordable. But ये देखिए आप हम लोग इसके ऊपर कितना पैसा फैकल्टी को दो, ऑल ओवर इंडिया पे ये लाइव करो, तो आप समझ लो यार कि आपको इसमें कितना पार्टिसिपेट करना चाहिए. पर नहीं करते बच्चे. दे आर नॉट टेकिंग बेनिफिट ऑफ दिस. ओके, दे वांट कि वो कोई तो ऐसा कलर वाला नोट्स बनाएंगे तो उनको वो मजा आता है. पर आपको है ना अच्छी फैकल्टीज मिलके उसका रिस्पेक्ट देके आंसर क्वेश्चन देना, ये नहीं मजा आता है. रिकॉर्डिंग में क्यों देखते हो, लाइव में देखिए. बेटा सूर्य कुमार ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बहुत सारे 100 स्टूडेंट्स एट अ टाइम आंसर देंगे तो कैसे होगा. यस, चलिए अभिनव मैं आपके आंसर्स दे दूंगा, डोंट वरी. So number of years of purchase means what? Number of years of purchase means, suppose Pritesh sir, if he's starting new business, how many years he will require to reach at the same level like Nikhil sir and Sanket sir. So number of years of purchase means how many years, if you start a new business, then how many years will you will take to establish your name is called as number of years of purchase. एक खुद की औकात बनाने के लिए कितने साल लग जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. ओके, मतलब नेम ऑलरेडी देयर इज एस्टेब्लिश नेम, और वो नाम पे आपको पहुंचने के लिए जितने भी साल लगेंगे मेहनत से, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. ओके सर, गॉट दिस कॉन्सेप्ट? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मींस years that you will take to establish your name with your competitors, and this is estimated amount. कौन बोल सकता है कि आज चलो मैं आज अंबानी को 3 साल में टक्कर दूंगा? नो भाई, कौन देगा? हाँ ठीक है, टैलेंट कुट कुट के भरा हुआ है, पर कितने साल लगेंगे ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता. एंड दैट्स व्हाई दिस इज द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमाउंट, इयर्स. एक सेकंड ना बेटा, एक सेकंड. ओके, so number of years of purchase, suppose if you are aware about calculation of number of years of purchase,
then it is given, and second one it is not given amount. Okay, चलो इधर लिख देता हूं मैं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. हाँ जी. So it is divided in how many parts बेटा? Yes, जल्दी से बताइए. Yes, आज दक्ष आंसर कर रहा है मेरे सेशन में. आज मम्मी नहीं है उसकी, आज घर से लेक्चर ले रहा हूँ. तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस बहुत शांति से बैठा है और पूरी कॉन्सेप्ट समझ के ले रहा है. थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा है, थर्ड स्टैंडर्ड का, एंड स्टिल इज आंसरिंग. ही नोज एवरी रूल्स ऑफ अकाउंट्स गिवन. कुछ तो गड़बड़ है. Yes, beta. Number of years of purchase are divided in two parts, given and not given. And what is number of years of purchase? अपना नाम बनाने के लिए कॉम्पिटिटर्स को कितने साल तक हमारा नाम बन सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस. ठीक है. गिवन और नॉट गिवन. So we are aware about number of years of purchase, and if we are not aware about number of years of purchase, then this is the method which is known as capitalization method. What is called as capitalization method. If number of years of not given, then it is a capitalization method. क्या बोलते हैं उसको? Capitalization method. Sir, capitalization method. So नाम में ही छुपा हुआ है. Capitalization method. Capitalization method. And if number of years of are given, there are three methods. कितने मेथड्स? 6. 3 methods. Not given only one. क्या नाम था? Capitalization method. And given में there are 3 methods. One is average profit. Second one, super profit. And third one, annuity. Annuity के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, but understand it. So there are 3 methods: average profit, super profit, and third one is a annuity. चलो नाम बताओ. पहला average profit, second one super profit, and third one annuity. And not given में कितने मेथड्स आएंगे बेटा? 1 method. Which one? Capitalization method. क्या नाम था? Capitalization method. Sir, understood the concept. चलो, understood the concept. Average profit. Profit means what? Profit means whatever you earned in the last year. Okay, is called as profit. Profit is nothing but whatever you earned in the past years. So beta, past years comparison are important. So in first standard, I got 98%. In second standard, I got 96%. In third year, I got 94%. So sir, I am on an average 90+%. On an average 90% student. So it shows your talent. Okay, so your past profits will talk about your profits. Okay, will future profits. So goodwill is always for the future, and that's why it is called as future maintainable profit. Future maintainable profit, FMP. Future maintainable profit. So I will call it as future maintainable profit. So your profits of past years are important to calculate your future profit. Okay, got the word? Future maintainable profit. So your past profits are important to calculate your future profit. So past years. So past years में assume करते in 2020, 21 and 22. Assume I'm in year 2023. So I will consider my past year profits 100, 120, 140 or 100, 110, 120. What is the average? 100, 110, 120 ka. What is the average? Average is nothing but addition of these 3 divided by 3 numbers. So 100 plus 110, 210 plus 120. So it is 330. It is 330 divided by 3. So your average profit is 110. तो आपका average profit कितना हो जाएगा बेटा? 110.
Average profit is 110. That you have to understand. Now, average profit is 110 and that will be multiplied by goodwill. So 110 multiplied by number of years of purchase. And that's why number of years of purchase. Assume 3 years. So our competitor jo hai, yeah, assume 4 years. So 4 years is 440. Okay. So goodwill calculation will be 440. And out of this, we will calculate. So goodwill is not brought by the Pritesh sir total amount. So Pritesh sir will bring 440 into 1/3 share. And that share will be divided. So Pritesh sir is a debtor divided 5/15 निकाला था ना हमने और संकेत सर का 4 and Nikhil sir ka 1. So accordingly we will divide. So 440 divided by 3, it is 146.67 divided by in the sacrificing ratio. So 146.67 divided by 5 into 4 is equal to, so Sanket sir will get 117 amount and Nikhil sir will get 29. So 147 or 30 rupees. Make it rounding off. So 117 Sanket sir will get 1 rupee here and there, it's okay. And Nikhil sir will get 30 rupees. Okay, beta. So this is how you calculate your calculations. Okay. So Pritesh sir will bring 440 rupees. No, sir. Total amount is 440. Total amount is 440. And Pritesh sir will bring only his share of goodwill, that is 440 into 1/3. And that will be shared by Sanket sir and Nikhil sir in the ratio of sacrificing. कौन से ratio में divide करेंगे? Sacrificing ratio में divide करेंगे. So this is goodwill calculation. So what is the amount that you calculated? So my question is that, sir, my question is that कि goodwill पूरा का पूरा प्रीतेश सर लेके आएंगे क्या? गुडविल पूरा का पूरा 440 प्रीतेश सर लेके आएंगे या हीच शेयर ही विल ब्रिंग? यस, टेल मी इट इन द कमेंट सेक्शन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुडविल इज अ प्योर कैलकुलेशन. You calculated it using average profit method. In average profit method, you use your past year profits, 100, 110, 120. You got the 110 average, and that will be multiplied by number of years of purchase, that is equal to 3. And that is the 330 of 4 years we multiplied. And that 440, yes, beta, he will bring full amount or he will bring only his share of goodwill. चलो जल्दी से comment section में बताइए. Yes, no sir, his share only. Very good. तो ये है आपकी goodwill की concept. क्या आप जानते थे? Yes, goodwill, you studied it in 11-12 standard, but have you studied it logically? Yes, how many of you studied logically? Beta, yes, this all calculation, what is number of years of purchase, what is given, what is not given, how many of you have completed? Please tell me it in the comment section. Those who have not watched my previous sessions. मेरे previous sessions देखना जो भी नहीं है, यदि live में मिलता है तो काई को previous session देखने हैं. Yes, चलो जल्दी से मुझे बताइए comment section में. Now goodwill concept is easy for you. Now whether goodwill concept is easy for you. You studied only his share. Pritesh sir will bring only his share. देखो गुडविल मतलब क्या है? गुडविल मतलब एक रेपुटेशन है फर्म का. जल्दी से हिंदी में रिवाइज कर दे जब तक आप लोग आंसर्स दे नहीं रहे. 11th 12th में किया था क्या? जल्दी से मुझे बताइए. इतना डिटेल में किया रहता तो बेटा आज तक संकेत सर को इतना टाइम ही नहीं लगता था आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ठुस ठुस के भरने के लिए. यस, तो गुडविल मतलब क्या? यस, सो गुडविल मतलब क्या है? गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द फर्म. अरे पूरा पैसा गुडविल का कोई नहीं लाता. जल्दी से रिवीजन करिए. हिंदी में बहुत फास्ट हो जाता हूं मैं. जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करें. गुडविल मतलब क्या? रेपुटेशन ऑफ द फर्म. रेपुटेशन ऑफ द फर्म में क्या होगा? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज गिवन होगा, नॉट गिवन होगा. गिवन होगा मतलब क्या होगा? गिवन मतलब नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, मतलब अपने औकात से अपने कॉम्पिटिटर के औकात तक जब जाने के लिए जितने साल लगते हैं उसको बोलते हैं गुडविल. तो अपने औकात से कॉम्पिटिटर ऑलरेडी बेटा वहां पे बना हुआ है तो उसके औकात तक जाने के लिए 3 साल में मैं बन जाएगा केजीएफ जैसा, 3 साल में मैं बन जाएगा उसके जैसा, या 1 साल में मैं वहां तक आ जाएगा. तो अपना खुद का नाम बनाने के लिए जितने साल लगते हैं उसको बोलते हैं. रॉकी भाई को जितने साल लग गए अपना नाम बनाने के लिए, अपना दहशत बनाने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल.
ओके, वो बोलते हैं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस गिवन होगा, नॉट गिवन होगा तो गिवन होगा तो एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड एन्युटी मेथड, ये 3 मेथड्स होते हैं। और नॉट गिवन होगा तो एक मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में हम लोग हमारा पास्ट ईयर का प्रॉफिट देखते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, डिवाइड बाय 3 किया तो हमको एवरेज प्रॉफिट मिला, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस किया तो 440 रुपया। 440 रुपया प्रीतेश सर पूरा नहीं लेके आएंगे, प्रीतेश सर सिर्फ अपनी अमाउंट लेके आएंगे। प्रीतेश सर की अमाउंट थी 440 इंटू 1/3, और वो डिवाइड करना था आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, दैट इज संकेत सर और निखिल सर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। बस इतना सिंपल चेक गुडविल कैलकुलेशन। यस, चलिए, वेरी गुड। चलो, सो गुडविल, आई गॉट द कॉन्सेप्ट। एवरीवन ऐसा बोलिए सर, आई गॉट द कॉन्सेप्ट। यस, आई गॉट द कॉन्सेप्ट, आई गॉट द कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी इजी एंड एंट्रीज आल्सो आई अंडरस्टूड। प्रीतेश सर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल पूरा नहीं लाते हैं, गुडविल तो पूरा 440 रुपया है, तो प्रीतेश सर सिर्फ और सिर्फ अपना शेयर लेके आएंगे, और संकेत सर और निखिल सर वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। बस इतना कॉन्सेप्ट समझ लो, इट्स वेरी सिंपल। नाउ इन केस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, in case of average profit, you are considering past profits. पास्ट के प्रॉफिट्स आप लोग कंसिडर कर रहे हो, क्या कंसिडर कर रहे हो? पास्ट प्रॉफिट्स। सर पास्ट में क्या हो सकता है? सर पास्ट में देयर माइट बी some good years, normal years. Good years means normal years. And there are some abnormal years also. So normal years you will always consider for the past year. Sir, that past year 2020, 21, 22. पर सर 19 में कोरोना था। सर 20 में कोरोना था, सॉरी 20 में कोरोना था सर। क्या करे, वो साल में तो कुछ कमाई हुई नहीं, और पास्ट प्रॉफिट में आप वो प्रॉफिट इंक्लूड करोगे तो हमारा प्रॉफिट तो बहुत नीचे जाएगा सर। इन कोरोना सीजन we nothing we earned, so how you can consider it in the past year's calculation? That year specifically you exclude it, that is the abnormal year 2020. Now we have two options, sir. We have two options. We are aware about our loss. Amount is known and amount is unknown. We can't calculate loss for that year. So it's a huge loss for us. We are not aware about that amount. Or second one, sir, we are aware about the amount because we know we got some contracts and that contract got cancelled due to corona. So sir, my loss is rupees 30. I am aware about my loss. That loss is rupees 30. So I'm not aware about that loss. So loss, I'm not aware. So dash. Sir, if amount is not aware, मुझे amount ही पता नहीं है, तो ignore that year. Don't consider it in your past profit calculation. So you'll consider 2019, you will consider 2020, you won't consider 2020, only 3 years you will consider, that is 2019, 21 and 22. But suppose, sir, we are aware about the losses. In 2019, we earned 120, here 140, here 150. We are aware about this loss of rupees 40. Sir, we will add back that loss. We will add back losses in the loss. And suppose, sir, I earned extraneous profit. Sir, extraneous profit I earned. Sir, my company is a vaccine company. And in 2019, in 2020, or suppose mask company. Normally, mask मेरा इतना बेचा नहीं जाता है. Only doctors, nurses, and patients are taking that mask. But sir, in 2020, we earned extraneous profit because everyone in India, he wants mask. Okay, so that year is an extraneous profit year. So, एक साल ही अच्छा था, उसके बाद वापस मास्क का डिमांड कम हो गया सर, अभी तो कोई पहनता भी नहीं.
So that extraneous profit we will deduct. 1 year is abnormal. You want profit. Why you want profit? Because that profit is a extraneous, that is a required profit. जैसे हेलमेट कोई नहीं पहनता नॉर्मली, 30% पॉपुलेशन 20% पॉपुलेशन दे वेयर हेलमेट इन पुणे, बट जैसे ही हेलमेट सक्ति होती है, इट्स मैंडेटरी, देन बेटा इमीडिएटली हेलमेट का सेल ऊपर, सो दैट इज नॉट अलाउड. Extraneous profits are not allowed. Okay, so you won't consider that extraneous profit. So losses we are going to add back, and abnormal profits we will deduct. So when amount is known, if amount is not known, sir, we are not aware about that losses, we will ignore that year. We will ignore that year. So got the concept? Goodwill calculation. So first one डिटेल में समझ में आया? अरे जो भी ईयर होगा रे छोड़ना, दिसंबर 2019 में आया तो 20 साल, ईयर 2020 इज एबनॉर्मल ईयर. ओके ठीक है ना, छोड़ देना बेटा, इतना क्या डिटेल में जा रहा है, भावनाओं को समझो यार. एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट you won't consider. Abnormal profits, abnormal losses, years, if amounts are not aware and if amounts are known, then we will consider it. चलो समझ में आया, बहुत इजी था. एवरेज प्रॉफिट. चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सुपर प्रॉफिट. सो एवरेज प्रॉफिट, कैन यू मेक इट समराइज बेटा? चलो समराइज कर लेते हो आप लोग जो भी समझा. सो आई विल रीड योर आंसर्स, आई विल गेट सेटिस्फेक्शन, यस स्टूडेंट्स आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट. सो बेटा देन आई विल मूव टू सुपर प्रॉफिट. चलो समराइज कर दो फटाफट फटाफट फटाफट, समराइज करो सुपर प्रॉफिट. चलो 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 फास्ट, सुपर प्रॉफिट में आ जाइए. लॉसेस बेटा भावना पटेल, लॉसेस एड बैक क्यों करेंगे? बिकॉज लॉस की वजह से वो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया है, दैट प्रॉफिट इज गेटिंग रिड्यूस. ओके, सो यू अर्न नॉर्मली यू अर्न बेटा 120 रुपीज, बट ड्यू टू दैट लॉस यू अर्न ओनली 90 रुपीज, एबनॉर्मल लॉस, एंड दैट्स व्हाई normal we are calculating normal profits. For goodwill is always for the future, and for future we will never consider abnormal years, we will consider always good years, and that's why we are adding back. समझ में आया बेटा भावना? तो हम लोग गुडविल ये ना फ्यूचर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. गुडविल हमेशा फ्यूचर के लिए कैलकुलेट करते हैं, गुडविल हमेशा फ्यूचर के लिए कैलकुलेट करते हैं. समझा? गुडविल हमेशा फ्यूचर के लिए कैलकुलेट करते हैं, ऑलवेज फॉर द फ्यूचर. नाइनटी 30 बेटा मैंने सिर्फ सोचा, 90 and 40, दैट्स व्हाई गुडविल इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर. एबनॉर्मल में अमाउंट इज नोन, is not known, exclude that year, and if amount is known, बेटा डिडक्टेड नहीं. देवेश आपने गलत बताया, लॉस होगा तो एडबैक होगा, प्रॉफिट होगा तो लेस होगा. लॉसेस हो गए तो एडबैक होंगे. फॉर एग्जांपल नॉर्मली आई अर्न 120 रुपीज, but in that year due to corona I earned only 90, so 30 is my abnormal loss. Mask wala normally he earned 120 rupees but he earned 170, so beta 50 rupees is abnormal gain. Abnormal gain, extraneous profit, extraneous profit. So extraneous profit we will deduct and extraneous losses we will add. We are calculating future maintainable profit for future. Goodwill is always for the future. We want to multiply by number of years of purchase, and we'll tell this amount to Pritesh sir. Then Pritesh sir will bring his share of goodwill in cash, or that we will see later. But he will bring his share of goodwill, and then that share will be divided over Nikhil sir and Sanket sir in sacrificing ratio. बेटा प्लीज गुडविल में इन्वॉल्व हो जाइए. गुडविल एक बार समझ में आया ना, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा कि आप लोग है ना मजे करोगे.
पार्टनरशिप को कभी डरोगे नहीं पार्टनरशिप से. यू विल एंजॉय टिल लाइफ टाइम. आप एंजॉय करोगे कि संकेत सर ने क्या कॉन्सेप्ट बता दिया, पूरा क्लियर हो गया हमें. डर नहीं लगाना है पार्टनरशिप, बिल्कुल नहीं. कुछ नहीं है डरने वाला. क्या है, अकाउंट्स है यार. डेबिट क्रेडिट है ही क्या उसमें. स्कोर क्यों नहीं करते हम लोग. चलो, लॉस बाय फायर ऐड होगा. यस बेटा धनश्री, वेरी गुड बेटा. चलो, सुपर प्रॉफिट. नेक्स्ट मेथड. लेट्स मूव टू नेक्स्ट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड. बेटा, सुपर इन नेम itself, it is excess profit. See, what is the target? Target is to calculate goodwill. Goodwill, when you call it as goodwill, when your profit is more as compared to your competitors' profit. Competitors के तुलना में आप बहुत आगे हो. नॉर्मल मिठाई वाला हल्दीराम पूरे इंडिया में छा गया गुरु. तो बेटा हल्दीराम का क्या होगा. यस बेटा, हल्दीराम का नाम बन चुका है बेटा मिठाई में. यस, हल्दीराम हल्दीराम हल्दीराम. So he has excess profit. Why? Because of his name. And his competitor profit. See, first we will understand our terminologies. Competitor's profit is less than our profit. बेटा एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है our profit and competitors profit. So what are technical names? Technical names. Our profit is greater than competitor profit. I am investing 5 lakhs. My capital is 5 lakhs. My competitor's capital is also 5 lakhs. He also employed 5 lakhs. But due to my name, I am earning 1 lakh rupees. And my competitor is earning 80,000 rupees. Capital is same. But I am earning huge amount, extra amount, 20,000 excess. And this excess amount is called as super profit. Now, super profit में capital employed is same. But still I am earning extra profit. So my profit is 1 lakh. And his profit is 80,000. 1 lakh is called as actual profit. Now, what is the terminology? Our profit is actual profit. And competitor's profit is called as normal profit. Competitorच्या प्रॉफिटला नॉर्मल प्रॉफिट म्हणतात सर. इट इज कॉल्ड as normal profit. Competitor's profit is a normal profit. So what is the formula? Super profit is actual profit minus normal profit. In exam it is given actual profit. And normal profit, how to calculate it in exam? Your capital will be same into normal rate of return, NRR. Normal rate of return. Competitor is earning 10%. Assume you invested 10 lakhs, he invested 10 lakhs. 10 lakhs you will get from the balance sheet capital, sir. Multiplied by normal return is 15%. How much he is getting? 15%. 1,50,000. And how much you are earning? 2 lakhs. So 2 lakhs minus 1,50,000 is called as super profit. What is 2 lakhs beta? Actual profit. What is 150? It is a normal profit. How it is calculated? Capital employed
capital employed into normal rate of return. What the concept? Yes, tell me it in the comment section. What is the formula? Chalo, jaldi se. Super profit. Super profit is equal to actual profit minus normal profit. This is the first formula. What are summary? Super profit, actual profit. You have to write full, yeah? Normal profit. So what is how to calculate normal profit? It's a capital employed into NRR. And how to calculate goodwill? Goodwill is equal to super profit into number of years of purchase. वो वही कॉम्पिटिटर के जितना साल लगेंगे औकात में आने के लिए. Yes, that is the super profit into number of years of purchase. So there are three concepts: super profit, normal profit, and goodwill calculation. चलो 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 fast. अरे बताइए चलो fast. Super profit method. एक्सट्रानियस लॉसेस एड बैक करेंगे बेटा. वेरी गुड भूमिका. ये सही है, मैं बताऊंगा बेटा. यस बेटा देवांश, यू आर करेक्ट. अमूल मिल्क एंड मधुसूदन, आई थिंक यू आर लोकल ब्रांड बेटा. यस समीर, वेरी गुड बेटा समीर. 100 मार्क्स मिले थे आपको 12th स्टैंडर्ड में. बहुत बढ़िया बेटा. सही है. दिस इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, आई कांट शो दक्ष ऑन दिस. ये प्राइवेट क्लास होता तो मैंने डेफिनेटली बताया रहता आपको पुणे ब्रांच में. थोड़ा सा मतलब पुणे ब्रांच इज ऑल्सो नॉट पब्लिक प्राइवेट, बट स्टिल वहां पे ठीक है. ये ऑल ओवर इंडिया देख रहे बेटा. यस, सो हु आंसर्ड वेरी फास्ट? ईशान बिष्ट. Super profit is equal to actual profit minus normal profit. Normal profit is equal to capital employed into NRR, and goodwill is equal to super profit into number of years of purchase. देवेश सोनी बहुत बढ़िया लिखता है बेटा. तू छा गया बेटा देवेश. In super profit, the formula of super profit, calculation of super profit is equal to actual profit minus normal profit. बेटा गलती से active profit लिखा है आपने. ठीक है, it's okay. Typing mistake. Calculation of normal profit is equal to NRR into normal capital employed amplified लिख दिया into normal rate of return. NRR है बेटा, NRR. And then goodwill is equal to super profit into number of years of purchase. It's very simple. मस्त लिखा है रोहिणी जाना ने. 1 2 3 1 2 3 करके लिख दिया. एवरेज प्रॉफिट में बेटा, हाँ कन्हैया का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है. सर कन्हैया पूछ रहा है, सर why are you calculating average profit? Sir, there are methods, different methods. So we have 4 options. Either you go in 2 BHK, either you go in the 3 BHK. You have different options. Whether you want your own plot, hire your take your own plot and build your construction beta. So this is bungalow plot. And 4th one, आप rent के इसमें रह जाइए. So you have different options. So it is your duty whether you go by average profit method, or you go by super profit method, or you go by capitalization method, or you go by annuity method. It's your option. So beta, these are options beta. So whichever is the best for your goodwill calculation, you can consider. Okay, so my suggestion, super profit is the best, otherwise capitalization method. I never follow actual profit method or average profit. Average profit, you consider your profits. You are not even comparing it with others. Okay, so you are considering your profits only. So actual profit is okay. Average profit एक मेथड हो सकती है, बट मुझे नहीं जजती वो मेथड, क्योंकि आप सिर्फ आपका प्रॉफिट, आपका गुडविल है, प्रॉफिट्स कमा रहे हो, उसके ऊपर गुडविल कैलकुलेट कर दिया आपने. कंपेयर तो करो बेटा. इधर सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, आप आपका प्रॉफिट आपके कॉम्पिटिटर के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करते हो. ओके, सो ये मेथड थोड़ा लॉजिकल वन है as compared to average profit. But beta, we do not have options. So it is we are giving these options to our clients. Either go by average profit, either go by super profit, either go by annuity method or capitalization method. Next method is annuity method. Beta, I'm not going to explain it in detail. You remember only this is a present value of super profit. Present value of super profit. So that I will explain it in the while doing calculations. So present value of super profit is the annuity method. Present value of super profit. And last concept is capitalization method. Last concept is capitalization method.
Goodwill adjustments over. After that, beta, we will take a short break. And after break, we are going to solve some illustrations of unit number 1. Today's exercise, unit number 2. यूनिट नंबर 2 ये आपको सॉल्व करना है, फटाफट इतना याद रखिए. यूनिट नंबर 2 आज का होमवर्क ये आपका होगा. यूनिट 2, आई एक्सप्लेन यू ऑल कॉन्सेप्ट्स. नाउ इट्स योर ड्यूटी टू सॉल्व इलस्ट्रेशंस. बेटा, दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट डूइंग दिस इलस्ट्रेशंस, यू विल नॉट गेट कॉन्फिडेंस व्हाइल सॉल्विंग. इतना मैं बोल देता हूं. अटेम्प्ट के ऊपर अटेम्प्ट लगेंगे. यदि आपने आज का एक्सरसाइज नहीं किया, आज आपके पास है 6 to 8 hours and tomorrow morning 4 to 5 hours, and if you are not doing your exercise unit number 2, beta, you are going to lose your marks. Make sure. That's why I requested ICI to take 5 days ka session, so students will do only partnership in these 5 days, not other than this accounting. NRR is normal rate of return. सूर्य कुमार, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब रिटर्न्स जो आपको बिजनेस देगा. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉर्मल रेट. रिटर्न मतलब एफडी रेट, वैसा बिजनेस का रिटर्न करने का रेट. सो इफ आई एम इन्वेस्टिंग 10 lakhs, बिजनेस इज गिविंग मी 10% रिटर्न. रिटर्न्स मतलब क्या? पैसा कितना देगा बिजनेस? मुझे 1 लाख रुपया देगा. ओके. So normal rate of return is beta 10 lakhs into 10% is a normal rate of return. Capitalization method. Now I am moving to next method, last method of the goodwill valuations. It name itself suggests that it's a difference between capital. In super profit is difference between profits. Difference between profits. Capitalization method is difference between capitals. Difference between capitals. It's a difference between capital. NRR is also estimated. NRR is also estimated. बेटा हाउ? बेटा मानवी खन्ना, आप मुझे बताओ, तीनों मेथड से आंसर सेम कैसे आ सकता है? हाउ 3 methods will give the same answer? These are some already. आप 2 BHK में रहने का ही फीलिंग 3 BHK में लेते हो क्या? आप वही बंगलो में लोगे क्या? अलग अलग फीलिंग्स रहेंगे ना, तो आंसर्स भी अलग अलग रहेंगे. कैसे रे मानवी खन्ना? ऐसा कभी कभी तू इतना इलॉजिकल क्वेश्चन क्यों पूछती बेटा? फिर सर गुस्सा हो जाते ना, अननेसेसरी. Capitalization method is difference between capital, but don't multiply by number of years of purchase. So here goodwill is equal to our capital. Suppose I am earning 2 lakhs rupees. This is my profit. For this I invested 10 lakhs rupees. It's my investment. And my competitor invested beta 20 lakhs rupees. But we both are earning 22 lakhs rupees. Profit is same, but our capital are different. I'm investing lower amount, get same profit. He's investing more amount. That's why my goodwill is there. So here formula is not actual capital. Competitor's capital is more. And my capital, own capital is less. But profit is same. Here, see the difference. Here, capital is different, profit is same. ऊपर सुपर प्रॉफिट में प्रॉफिट इज डिफरेंट, कैपिटल इज सेम. प्रॉफिट इज डिफरेंट, कैपिटल इज सेम. आया समझ में? प्रॉफिट इज डिफरेंट, कैपिटल इज सेम. इन सुपर प्रॉफिट मेथड, इन कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटल आर डिफरेंट बट प्रॉफिट्स आर सेम. सो माय कैपिटल कितना बोलूंगा? कॉम्पिटिटर्स कैपिटल को बोलते हैं. कॉम्पिटिटर्स कैपिटल इज अ नॉर्मल. फॉर कॉम्पिटिटर्स इट्स अ नॉर्मल कैपिटल. एंड ओन कैपिटल इज एक्चुअल. खुद का जो होगा वो एक्चुअल. सो कॉम्पिटिटर के लिए वर्ड यूज करना है नॉर्मल. फॉर कॉम्पिटिटर यूज वर्ड नॉर्मल, एंड फॉर ओन यूज एक्चुअल.
How you have calculated normal capital? See, capital into NRR is equal to profit. Therefore, capital is equal to profit upon NRR. Profit upon NRR. See, this is the basic understanding. So this is the last method. Rewatch this session. Okay. Suppose if you are getting any difficulty, rewatch. Free है ना भाई? 10 बार देखो. But first one, interact with me. Okay. So here capitalization. Now I'm taking a quick revision and then I'm going to give you a break. Break ke pehle, yes, now understand. Learning outcomes, meaning of goodwill, methods of goodwill, types of ratios that we'll cover it in the next session, and accounting of goodwill. So accounting of goodwill, now goodwill is clear, beta. See, now I'm going to take your meaning of goodwill. Meaning is a reputation of the firm, unidentified benefit from which the firm enjoys, help to get higher profits. So beta, your profits are higher than your competitors' profit, then your goodwill. It's an intangible asset because we cannot see that goodwill calculation. And one last one is a self-generated goodwill is not to calculate. Beta, goodwill kab calculate hoga? When there is admission, when there is retirement, when there is death. Someone is coming or someone is going out. Okay, then goodwill is calculated. Otherwise, ऐसे ही मन में आ गया, चलो आज क्या करना है, आज सुबह कुछ काम नहीं है, goodwill calculate करते हैं. No, not allowed. Self-generated goodwill is not allowed as per S26. Self-generated goodwill means own calculation. Why you are calculating goodwill? When to calculate? When someone is coming, na. Admission में calculate कर, retirement में calculate कर, death में calculate कर, और goodwill को हटा दे फिर books में से. Goodwill is not allowed to show it in the books also. Always estimated, sir. Always estimated. Yes, already explained you. Always estimated. And last one, as per S26, self-generated goodwill allowed नहीं है. Okay, allowed is नहीं है. Got the concept? Yes. Methods of goodwill. How many methods, beta? Meaning के बाद methods. Number of years of purchase given. Not given. Now you can recall it, beta. This session. Now see these timings. So whenever you want revision, you can revise it quickly. ऐसा लिख के रखने का कि revision के लिए सर ने last में ये लिया था, मैं उतना ही देखूंगा. Because it's a human tendency that you are going to forget all these things after 7 days if you are not revising it. 7 days में blank हो जाएगा. So it's better always to revise it after every 7-8 days. Okay, all topics, any topic you can revise it. Any topic randomly. Number of years of purchase given, beta, average profit, super profit, and annuity method. So average profit, super profit, and annuity method. Capitalization method, वो वही पे है. Average profit के बारे में बात कर लेते हैं. Average profit. Goodwill is equal to average profit in the number of years of purchase. Average profit is of 2 years. Normal years profit. Abnormal years are also there. Normal years, beta, you will consider for the calculation. Yes, very good. Abnormal years, if amounts are known and amounts are not known. Okay, amounts are not given. Amount is given, so beta, add back this, and amount is not given. Then abnormal losses you will add back, and abnormal profit you will less, and amounts are not given. Then you can ignore that year. Okay, so you can see कि आप इसका screenshot भी ले सकते हो if you want. Screenshot भी ले सकते हो. Average profit method. Okay, easy che? Yes, next one. Average profit method का example में नहीं देते बेटा, तो ठीक है चलो. 2008, 9, 10, 11, yes beta, 120. See, you can see the change. 100, 110, 20, 20. 2010 में से 20 कहाँ से आया सर? 2011, yes, again 120. So year 2010 में strike हुआ था, strike occurred, and that's why it is a abnormal amount. Answer में abnormal loss amount is not given, so we are not aware about that losses. So ignore 2010. So we will consider only 8, that is 100 rupees, 110 and 120, and we will consider only 3 years. So 3 years we'll consider. So average profit is 110. Suppose in the same question, if abnormal loss amount is 110, amount is given. So 110 is amount of loss. So 110 plus 20 abnormal losses हमें add करने हैं. So we will consider 20 plus 110, that is 130. So our answer, average profit 100 plus 110 plus 130. 130 we will consider, not 20 for 2010.
and then 140 divided by 4 years. So amount is 120. So this is a logical one. Second method, super profit, as name suggests. As name suggests, it's a super profit is extraneous profit. Extraneous profit will consider how to calculate goodwill is equal to super profit into number of years of purchase. It's the first formula. How to calculate super profit? Super profit is equal to actual profit minus normal profit. Actual is our profit, normal is our competitor profit. Remember, capital is same. And third one is a normal profit. Normal profit, how to calculate? It's the capital employed into normal rate of return. Normal rate of return, you will multiply. You can take a screenshot if you want. Easy है goodwill. Goodwill दिमाग में पूरा गया बेटा. Normal rate of return अभिनव कुमार. आयुष तिवारी जी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. प्रैक्टिस करके आपको समझेगा रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट कौन से, और आप मेरे शुरुआत के सेशन देख लो. Problem is that number of years of purchase 4 years, capital employed is 1 lakh, NRR is 10%. Can you calculate goodwill for me? चलो जल्दी से goodwill बता दीजिए. Yes, फटाफट goodwill बता दीजिए. चलो goodwill बता दीजिए फास्ट. goodwill बता दीजिए. लाइव में आंसर देना जरूरी है. दो यू आर गिविंग रॉन्ग आंसर, प्लीज आंसर इट. दो स्टूडेंट्स, अरे बेटा 10 दिन मेरे साथ कोई छोटी बात है क्या? डेली बेसिस पे रोज आना है आपको. अभी कितनी मजा आनी चाहिए आप. करेक्ट आंसर इज, हु आंसर वेरी फास्ट? हिमांशु पाठक ने दिया आंसर. नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख इंटू 15%, दैट इज 15,000. सुपर प्रॉफिट 20,000 माइनस 15,000, 5,000, एंड गुडविल इज इक्वल टू 5,000 इंटू 4 ईयर्स. दिस इज 20,000, 20K. 80,000 किसने तो भी आंसर दिया था? रॉन्ग बेटा. सही है मा रॉन्ग. एंड भावना पटेल के मामा आंसर आप पूछो बेटा. रॉन्ग आंसर नहीं आप शो. भावना पटेल 5,000 गुडविल कैसे आएगा यार? 5,000 को पीपी का 5,000 इंटू 4 ईयर्स कौन करेगा रे बेटा? श्रीनिधि रॉन्ग आंसर बेटा. 75,000 कहां से आया आपका? चलो कोई बात नहीं. एन्युटी मेथड इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट. बहुत सिंपल मेथड है, रहने दीजिए, ये मैं बाद में ले लूंगा. एंड लास्ट मेथड इज अ कैपिटलाइजेशन मेथड. 99,000 चहल सोनी कुछ भी बोलते हैं यार, कुछ भी मन में आया. वो एकता तिवारी क्या आंसर दिया? 10,000 कहां से आया बेटा? ठीक है, गॉट दी कॉन्सेप्ट. जिनको भी समझ में आया है, जिनका रॉन्ग हुआ था बेटा प्लीज याद रखो. ये कैपिटल, when you are comparing capital, see here you don't multiply by number of years of purchase in goodwill calculation. In capitalization method, no number of years of purchase मायने नहीं रखते, so don't multiply. So it's very simple formula. Don't multiply by number of years of purchase. In average profit method, in super profit and annuity method, you multiply by number of years of purchase, but here you don't multiply by number of years of purchase. That's why it is number of years of purchase not given में आता है. You have only one option, that is a capitalization method. Okay. So here गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल प्रॉफिट कैपिटल. एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर. सो प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर. और देयर इज डायरेक्ट फॉर्मूला एक गुडविल का. हाँ, ये मैं भूल गया था बताना. दिस इज वन मोर फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर. डायरेक्ट यू विल गेट द गुडविल. सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर. सो फर्स्ट स्टेप you will calculate 2 normal capital minus actual capital. And how to calculate normal capital? Actual profit upon NRR. Profit will be same. Second alternative. So ये मैं भूल गया बताना आपको. Super profit divided by NRR. Super profit divided by NRR. Problem for you. चलो fast. Problem for you. Calculate the answer. Goodwill. Calculate the answer. बेटा fast. आज मैं 1:30 तक लेगा. ब्रेक के बाद आगे लेना पड़ेगा मुझे. आज प्रॉब्लम पार्ट्स भी है. आंसर इट.
गलत आंसर दीजिए, पर दीजिए, आंसर्स देना जरूरी है। $20,000 डिवाइड बाय 15%। ओके, करेक्ट आंसर बाय ईशान बिष्ट। Goodwill is equal to normal capital minus actual capital. 20,000 divided by 15% minus actual capital is 1 lakh. 1 lakh 33,000 minus 1 lakh 33,333. Yes, you are correct. So ईशान is a correct one. बेटा ईशान का आंसर सबसे करेक्ट आया था सबसे पहले, और तेज जो भागे वो ईशान थे। करेक्ट आंसर इज 33,000। दीपिका ने आंसर करेक्ट दिया, 33,333। Okay, so goodwill we have completed. What are entries for goodwill बेटा? रेशियोज रहने दीजिए। In case of admission, it is sacrificing ratio. In case of retirement, it is gaining losing ratio. So this is very important. So sacrificing ratio means new partner. Pritesh sir will bring an old partner. Sanket sir and Nikhil sir will take that amount. And in case of retirement, continuing partner मतलब जो business में रहने वाले हैं, they will bring the amount of goodwill, and who will take that amount? Retired or deceased partner. Very, very important one. Okay. Continuing partner debit, it is called as gaining losing ratio. So continuing partner debit to retiring partner. SS firm, see this logic. SS firm admission, there are two partners. SS, Mr. SS, and you can see Miss Mona. Okay, शादी के पहले की Mrs. Mona, and this is Mr. Daksh, new partner. Daksh Shah. Okay, so Daksh Shah. So entry will be, entry क्या होगी? Daksh will bring amount. Now there are three partners बेटा, एसएस के फॉर्म में तीन पार्टनर आ गए। सो एंट्री क्या होगी? एंट्री विल बी दक्ष पैसा लेके आएगा, कैश ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, कैश अकाउंट डेबिट, एज्यूम कैश अकाउंट डेबिट टू दक्ष 1,50,000। देन कैश इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। 1 लाख इज टूवर्ड्स कैपिटल, 1 लाख किसके टूवर्ड्स लेके आएगा? कैपिटल के टूवर्ड्स, एंड 50,000 टूवर्ड्स गुडविल। कैपिटल बिजनेस में वैसा ही रहेगा, रिटेन इन बिजनेस, एंड 50,000 विल बी टेकन ओवर बाय ओल्ड पार्टनर एसएस एंड मिस्टर एसएस, मिसेस एसएस in the sacrificing ratio. So this is the goodwill entries beta. Goodwill entries you understood? Sacrificing ratio में लेके जाएगा। दक्ष, अभी एंट्रीज में बाद में बताऊंगा, ठीक है? एंट्रीज आप लोग खुद से सोचोगे। सो ये था गुडविल। आई होप यू एंजॉयड गुडविल कैलकुलेशंस। एंट्रीज में कल बताऊंगा आपको। सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर टेकिंग ब्रेक। सो ब्रेक के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 1 के इलस्ट्रेशन। नाउ इट्स एन एक्शन पार्ट। ब्रेक में फुल एनर्जी लेके आना, क्योंकि सर के साथ सॉल्विंग करना है, सर के साथ सॉल्विंग करना है। ब्रेक के बाद वी आर गोइंग टू मीट एट 12:40 to 1:30। ओके, टुडे प्लीज गिव मी एक्स्ट्रा टाइम। पार्टनरशिप इज अ डिफिकल्ट चैप्टर एंड वी हैव टू फिनिश इट इन टाइम। आई होप एवरीवन एंजॉयड, सब लोग ने एंजॉय किया। पार्टनरशिप कोई भी ऑप्शन में नहीं रखेगा। अभी इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है, पहली बैच है कि मैंने इतना डिटेल में लेके गया हूं, पूरा एंजॉयमेंट करवाया, आपको विजुअलाइजेशन करवाया। नाउ इट्स योर टाइम टू गिव इट बैक। ओके, सो ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे एंड वी विल एंजॉय इलस्ट्रेशंस ऑफ यूनिट नंबर 1। तो प्लीज टेक अ ब्रेक।
Welcome back once again. I hope you revised all entries in the break. Better revisions are very important in CA course. First thing, understanding concepts in detail, and then try to solve illustrations. Why students are normally getting less marks from their potentials? Reason is very simple. See, some students are very average students. So 80% students in CA course, they are average. If they work hard, then only they will get the success. And for working hard, there is no another option. Second one, 20% students, they're intelligent, but out of that 10% are taking it very casually. And 10%, they're born intelligent. So beta, if they once understand the concept, they can retain it. For example, Daksh के बारे में भी मैं देखता हूँ ना, memory wise. So if he reads once, he can recall it एनी टाइम. अभी वो यहाँ पे बैठा था, थर्ड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है यार, मैंने उसको भेज दिया क्योंकि ये डिस्टर्बिंग हो रहा था मुझे. उसने तुरंत नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस मैंने जैसे ही बताया, अभी थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा यहाँ आके मुझे एक इसमें मेमोरी में बता रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट और ये एन्युटी, और वहां पे बाजू में कैपिटलाइजेशन मेथड. वो देख रहा था, सिर्फ सुन रहा था, उसने चार्ट भी नहीं देखा. एटलीस्ट यू कैन विजुअलाइज इट. वो तो सामने बैठा था. तो ये मेमोरी है, वो मुझे पता है उसकी मेमोरी, पर वो यूटिलाइज नहीं करता, वो बात अनदर है. पर ये चीजें जो है ना, जो एक बार मेमोरी में बैठ जाना, तो आप इन्वॉल्व हो जाइए. जितना इन्वॉल्वमेंट आपका होगा स्टडी में, उतनी आपको एंजॉयमेंट करने को या मजा आएगी. बस बाकी चीजें दिमाग में नहीं रहेगी. सोशल मीडिया, आपके दिमाग में 10 चीजें चालू रहती है. जब मैं सिखाता हूं तो मेरा पूरा फोकस ये सिखाने पे रहेगा. और ये चीज बहुत जरूरी है कि हम लोग इन्वॉल्व कितना हो रहे हमारे स्टडी टाइम पे, एंड वेदर वी आर एंजॉइंग और नॉट. ठीक है बेटा. चलिए, सो आज का इलस्ट्रेशन हम लोग चालू करते हैं. इलस्ट्रेशन 1 से बहुत सिंपल क्वेश्चंस है. सो जस्ट वी विल सी कि ये क्वेश्चंस की कैटेगरी भी हम लोग देख लेंगे इंडेक्स का. वो इंडेक्स A&B starts business on 1st January 2019 with capital of rupees 30,000 and 20,000. According to partnership deed, B is entitled to a salary of rupees 500 per month. See beta. First entry will be bank account debit to A's capital to B's capital for 30,000 and 20,000. Next, according to partnership deed, he is entitled for salary. So first thing in my mind, salary is expenditure. It has a debit balance. So salary account debit. To whom it is payable? To B. B is it is payable. So salary account debit. So what is the entry? Salary account debit. Don't write it. To B's capital account. Salary is expenditure. And B is our creditor. So we have to pay him. So to B's capital, 6,000, 6,000. We are going to charge interest on capital. So now ICA has what done? Salary, they transfer it directly to P&L account. And P&L appropriation, because it is a partner related amount. So P&L appropriation. So salary account debit. Instead of salary debit, उन्होंने directly क्या कर दिया? P&L appropriation debit. But my suggestion, first pass the entry salary account debit to B's capital, and then P&L appropriation account debit to salary account. So salary, they cancelled it. But you have to pass two entries, P&L appropriation debit to salary account. I will give you screenshot time. Wait, just wait for some time. So this is 6,000 rupees. Interest on capital account debit. Interest on capital account debit to A's capital to B's capital. Interest on capital is also expenditure. You can write over there. Expenditure. So interest on capital account debit to A's capital. A capital is a creditor. B capital is a creditor. Now 30,000 pay. 6% is 1,800. And here 20,000 pay, B per 6% is 1,200. So 3,000, 1,800, 1,200.
1,800 and 1,200. This is salary account debit to A's capital. Sorry, interest on capital to A's capital and B's capital. And second entry will be P&L appropriation account debit to A's capital to B's. P&L appropriation to interest on capital. You can check the entries. आप entries को भी देख सकते हो यहाँ पे. Salary account debit to B's capital, P&L appropriation account debit to salary. So salary will get cancelled. ICI ने एक ही entry pass किया है. This is interest on capital to A's capital to B's capital, and then P&L appropriation to interest on capital. ICI ने एक ही entry pass किया. And now balance in P&L appropriation. You can check the balance in P&L appropriation. So balance will be, see, 25,000 before charging salary and capital. So beta 25,000 is by net profit. So see P&L appropriation account always has credit plus by net profit. You can check. Please revise it, beta. Please revise it. 25,000. Okay. And on debit side, what you are going to write? Your expenditure to salary and to interest on capital. To salary કેટલો છે? 6,000. And P&L appropriation કેટલો છે? Interest on capital 3,000. 1,800 A का और B का 1,200. And balance profit you will transfer it 25 minus 6 minus 3, 25 minus 9, 16,000. You will transfer it to A and B in which ratio? In their profit sharing ratio. So their profit sharing ratio is 5:3. 5/8, 3/8. I'm telling you shortcut on Calci. So 16,000. Take on Calci 16,000 divide by 8. Divide by 8 into 5 is equal to 10,000. And then just press 3 is equal to 6,000. क्या होता है आपको? You know the shortcut. 16,000 divided by 8 into, it's a common beta. Then just press 5 is equal to and 3 is equal to. ये common Calci के दिमाग में बैठ जाता है. So it will return by Calci 16,000 divided by 8 into 5 is equal to, and then just press 3 is equal to, you will get the answer. So this is a Calci shortcut. You can write it. Calci shortcut. Easy che? Easy che? Easy che? Easy che? First question over. P&L appropriation understood? अरे easy che के? ओके डन बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन किया था आप लोगों ने. सैटरडे संडे आज तो बहुत होमवर्क है आपको. सो फर्स्ट क्वेश्चन ओवर बेटा. Okay. Yes, beta. P&L appropriation account debit to A's capital to B's capital is the last entry. Yes. See how to revise it. How to revise it. See, suppose if I'm doing a revision, some students are asking me, sir, आप कैसे याद कर लेते हो पूरा का पूरा? No problem. See, first entry, salary. Salary मेरे दिमाग में आता है. Salary is our expenditure. Salary to whom we are paying to B's capital account. So salary account debit to B's capital. First entry. Second entry, interest on capital. Interest on capital account debit to A's capital to B's capital. Okay, interest on capital is an expenditure. So debit to A's capital to B's capital. Third entry, P&L appropriation account debit to salary to interest on capital. So salary balance will get 0 and P&L appropriation में से debit होएगा. And what is the balance in P&L appropriation? 25,000. 25,000 में से कितना माइनस हुआ? क्रेडिट बैलेंस. डेबिट 2 दिए.
दो डेबिट दिए, एक 6,000 and 3,000. So balance remaining 16,000, and that balance will be transferred to balance. Now after this entry, you can write over there, balance will get 0, and their capital is getting increased. Their capital, due to profit, your capital is getting increased. Profit is increased, increasing capital, contributing capital. इसलिए मेरा मुझे ना visualize होता है, and that's why my accounts is yes perfect. Visualize होना बहुत जरूरी है accounts में. Yes. Think logically, beta. Illustration number 2. Illustration number 2. Ram, Rahim, Karim are three partners in the firm. They have no agreement, underline, no agreement in respect of profit sharing ratio, interest on loan, and remuneration. In the matter of distribution, Ram, who contributed maximum capital, demands 10% and profit in capital sharing ratio, not allowed. So beta not allowed. वहां पे लिख दो, not allowed. No agreement, not allowed. Rahim was devoted full time and asking for salary, not allowed. Agreement में होता तो ठीक है. No partnership deed, not allowed. Karim demands 2,000 advance by him as a market rate is 12%. No, we are giving maximum 6%. So 6% is allowed, 120 rupees. How you should settle the dispute between them? Prepare P&L appropriation, transferring 10% of the divisible profit to reserves. So 10% ICA ने बताया है, you have to transfer it to divisible reserves. Okay. So what is the divisible means distributable profit. Divisible मतलब क्या? जो profit आप partner को देना चाहते हो. It is called as distributable. Divisible means distributable. Distributable profit means profit which you are going to your partner. Partner का capital जिससे increase होने वाला है. Distributable. So distributable means a divisible. Divisible मतलब distributable. So what is the net profit, beta? What is the net profit? Please try to understand these lectures. By profit કેટલો છે? 45,000. 2 to what? Interest on loan 120 to interest on loan 120, and then you have, yes beta, taking beta, no, don't worry, to general reserve 10% into 45,000 minus 120, 45,000 minus 120 into 10%, 4488, and then whatever the balancing figure plus 120 minus 45,000. So balancing figure is 40,392, and this will be transferred between Ram, Rahim and Karim in the ratio of, nothing is mentioned, equally 1/3. So divide by 3. So everyone is getting 13,464. 13,000, yes, to share in profit. Correct? Chalo. Illustration number 3. Very easy, beta. Only drawings amount you have to write. P&L appropriation, and there is no interest on drawings, beta. There is no interest on drawing. It's very simple. So illustration 3 you can do by your own. Illustration 4 also you can do by your own. हम लोग आते, you 3 and 4 are really very easy.
इलस्ट्रेशन 5 पे आते हैं. ओके, इलस्ट्रेशन 5 and 6. See, beta, please keep some patience. I know it's 1 o'clock now. You are hungry, but बेटा आज तो 30 मिनट 5 और 6 में ले लेता हूँ तो आपको बहुत इजी जाएगा. एंड टीवाई के वी आर गोइंग टू ट्राई टू सॉल्व. बेटा वन मोर डे विल टेक कीप इट फॉर यूनिट 1 एंड यूनिट 2. तो कल का दिन हमारे पास होगा यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए. बट टुडे यू हैव टू रिवाइज ऑल यूनिट 2 एंट्रीज. तो यूनिट 2 के सभी एंट्रीज को पहले रिवाइज करो. तो हम लोग कल ये दोनों चैप्टर के 5 और 6 नंबर के क्वेश्चंस में ले लेता हूं और उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 2 पे शिफ्ट कर देंगे. कल हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बस. तो थर्ड डे कल थोड़ा सा 20 मिनट का एडमिशन के रिविजन्स होंगे. 20 to 25 मिनट्स आई विल टेक सम रेशोज क्वेश्चंस. रेशो फर्स्ट कंप्लीट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यूनिट 1 और यूनिट 2 के एंट्रीज. सो डे 3 कल का है. कल सॉल्विंग पार्ट रहेगा. यू हैव 7 सेशंस. एडमिशन के लिए 2 दिन रखेंगे. डेथ रिटायरमेंट के लिए 2 दिन रखेंगे. 4, 3, 7. और डेथ का पॉसिबल होगा तो, नहीं तो अदरवाइज रिकॉर्डेड सेशन. हम लोग देखते हैं कितने दिन मिल रहे हैं क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास. ओके, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. 7 से 8 दिन में हमें ये टॉपिक खत्म करना है. ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in their effective capital. So PSR is equal to, you can write here, PSR is equal to capital sharing ratio. PSR is equal to capital sharing ratio. जो भी मैं बोलता हूं वो आपको लिखना है ऑन स्टडी मटेरियल. सो यस, वॉट एवर आई एम राइटिंग ऑन स्टडी मटेरियल, प्लीज राइट डाउन इट. राइट इट डाउन फास्ट. Okay. They had 1 lakh and 60,000 respectively in their capital accounts. Yes बेटा, होमवर्क 400 पेजेस के नोटबुक में करो. बेटा अभिनव कुमार 12% इंटरेस्ट दिया रहेगा पर पार्टनरशिप डीड नहीं होने की वजह से 6% ही देना है. P&L एप्रोप्रिएशन थ्रू जनरल एंट्रीज पास करनी है दर्शन जी. यस, चलो. PSR is equal to CSR 1 lakh and 60,000. A introduced further capital 10,000 on 1st April, another on 5,000 on 1st July, and 30th September को he withdrew 40,000. How much amount he withdrew बेटा? 40,000 on 30th September. तो effective capital of A. Effective capital of A. Understand. Date, don't write it. Take a screenshot and you can write it afterwards. Do you remember that format of average due date? Number of months up to 31st December and then product. Don't write it. I will give you time to take screenshot. Date, when he introduced? On 1st Jan, he introduced 1 lakh. On 1st Jan. Then on 1st April, 10,000. 1st July, 5,000. And on 30th September, or you can write 1st October. मैं तो जो डेट है वही लेता हूं. 30th September, he withdrew 40,000. So full 12 months up to 31st December. 1st April to 31st December, 9 months. 1st July to 30th September, December, 6 months. And 30th September, that is October, November, December, 3 months. This is 12 lakhs. This is 90,000. 30,000. And product is 1,20,000. Take a total. I think it's a 12 lakhs. 90 plus 30, 120 minus 120, 10. So 12 lakhs is a total. So effective capital divided by 12, because number of months you are taking, that's why you have to divide by 12 effective capital end May. So it will be 1 lakh rupees.
effective capital, and interest on effective capital 1 lakh into 12%. It is 12,000. So answer is effective interest is 12,000. Yes, correct. Now for B, yes, now for B you can calculate, you can take a screenshot now. For B, yes, easy. Same calculation you have done beta or some different? ऐसे का थोड़ा different है calculation, but our calculation is more easy. You can see. So you can take a screenshot, A's capital and B's capital. A capital and B capital. Yes, tell me. Easy है? थोड़े patience रखिए बेटा. I know you are hungry beta, but patience, patience. अर्शदीप मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ. डोंट वरी बेटा, मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ. यस, बाकी स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस टेक्निक? ध्वनि इज सेइंग सर इजी छे. जिया पटेल यस सर अंडरस्टूड. समीर सिंह बोल रहे यस सर. जेवा बोल रहे हैं इट्स इजी सर. भूमिका भी बोली अंडरस्टूड सर. एकदम इजी बेटा. देन बेटा ड्राइंग्स. यस सही है मां. वेरी गुड बेटा. चलो. Now the partners drew the following in anticipation. Now this is, yes, you can write here up to this is a capital. You can write over there curly bracket capital, and from this to last it's a drawings. Yes, do you remember that 1000 per month at the beginning of the each month? क्या फॉर्मूला था? चलो फॉर्मूला क्या था बताइए. चलो टेल मी दी फॉर्मूला. चलो पार्टिसिपेट करो फटाफट, सेशन में पार्टिसिपेट करो. चलो चलो चलो. 1000 पर मंथ ये बिगिनिंग से ड्रॉ किया था. चलो बताइए जल्दी से. 1000 पर मंथ ड्रॉ किया रहेगा तो क्या फॉर्मूला होगा? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स किससे मल्टीप्लाई किया था बेटा हमने? इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू यस टेल मी फॉर्मूला. एट द एंड ऑफ ईच मंथ. एट द एंड ऑफ ईच मंथ तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस बेटा सही है मां. ठीक है बेटा. बिगिनिंग नहीं, एंड एंड एंड. उस्मान एंड में है. सॉरी, इट्स नॉट बिगिनिंग, इट्स एंड. ईच मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ. बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी लिखा है. सॉरी, एट द एंड ऑफ ईच मंथ है. यस उस्मान. बिगिनिंग होगा तो 6.5 एंड एंड होगा तो यस बेटा एंड होगा तो 5.5. वेरी गुड. सो यू कैन राइट ओवर देयर 1000 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 10% ना, into 5.5. It's very simple. 1000 into 10% into 5.5. Very good. Answer is 550. Answer is 550. Asdeep 556. B drew 1000 on 30th June and 5000 on 30th September. क्या कॉलम बनाओगे? कॉलम्स क्या बनाओगे? कॉलम्स क्या बनाओगे बेटा? कॉलम्स क्या बनाओगे? डेट for this amount, number of months, same columns beta up to 31st December, and product. Date सूच है 30th June
30th सितंबर 1000 30 जून एंड 30 सितंबर नंबर ऑफ मंथ्स 12 सॉरी 6 3 3000 सॉरी 6000 15000 21,000 21,000 divided by 12 is effective drawings 1750 is called as effective drawings and 1750 into 10% answer is 175 interest on drawings. See the answer 175 50 plus 125 175 correct. Our method is more easy na beta. चलो take a screenshot of interest on drawings का भी. Yes, interest on drawing screenshot ले लीजिए. Easy छे एकदम. I know ICS students are intelligent ना. They are trying, they are solving it at home. Just देखते नहीं है, घर पे कुछ तो solve करके भी आते मेरे students. They always try to first they solve it, then they understand संकेत sir's technique in easy way. संकेत सर की टेक्निक इजी वे में बाद में. पहले यू विल सॉल्व टुडे ऑल्सो. गुडविल यू विल सॉल्व. बेटा प्लीज डिवोट 4 to 5 hours टुडे. आज सिर्फ पार्टनरशिप कीजिए. ये 6 दिन सिर्फ पार्टनरशिप. 4 hours डेली. 4 hours डेली. वेरी गुड. बेटा 12 is divided. Why बेटा? 12 is effective drawings ना. Effective drawings लिया है. Divide by 12. After dividing by 12, you will get effective drawings. And effective drawings पे interest होगा 10%. $1750 and then interest is 175. Effective means साल भर का effective drawings. Name itself suggests that 1,000 you withdrew, 5,000 we withdrew. So effectively you withdrew 1,750. So 6,000 we withdrawn. But 6,000 dates are different. That's why in per year you withdrew only 1,750 according to इफेक्टिव ड्राइंग्स. ओके, सो इफेक्टिव ड्राइंग मतलब आपने साल भर में कितना पैसा निकाला. साल भर में पैसा 6,000 निकाला, पर इफेक्टिवली मंथ्स को कंसीडर करते हुए 1,750 रुपया निकाला. कितना निकाला? 1,750. ठीक है, इजी. अभी इजी है. अरे इजी है क्या? इफेक्टिव ड्राइंग्स कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? टुमारो आई विल गिव यू इंडेक्स ऑल्सो. डोंट वरी, इंडेक्स मैं कल देता हूँ, आज मेरे पास नहीं है इंडेक्स. टुमारो आई विल गिव यू इंडेक्स. बेटा 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 जल्दी से बताओ. इफेक्टिव इंटरेस्ट, इफेक्टिव कैपिटल यू अंडरस्टूड? यस अर्शदीप. चलो बेटा जल्दी से बोलो. इजी छे, इजी छे, इजी छे. फटाफट बोलो, फटाफट बोलो. तो नेक्स्ट इसमें मूव करते हैं. 6 नंबर. अभिनव कुमार दक्ष को दिखाइए. बेटा नहीं बेटा प्लीज, पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है. पब्लिक प्लेटफॉर्म है. सर व्हाई व्हेन आई ट्राइड माई सेल्फ आई फाइंड इट मच मोर डिफिकल्ट. मानसी शर्मा, बट नाउ यू मेक इट वेरी सिंपल. सर योर मेथड इज इजी देन स्टडी मटेरियल सिंपल. ओके जेबा जी थैंक यू. चलो दक्ष को दिखाइए. अभिनव नहीं रहे बाबा, नहीं नहीं नहीं. चलो सर वेयर दिस अमाउंट 50 and 125 कम. बेटा जाने दो, उनको छोड़ दे.
50 एंड 150 का टोटल ले ले, 175 ले ले, वो इफेक्टिव कैपिटल से निकालते वो लोग। लक्षिता, यस यस यस। इलू 6, हाँ जी बेटा, एकता। इफेक्टिव कैपिटल का मीनिंग क्या है? इफेक्टिव कैपिटल मीन्स यू विड्रू 6,000, बट इफेक्टिवली ईयर वाइज पूरे 12 मंथ्स में आपने कितना निकाला, सो इट्स इक्विवेलेंट टू 1750। Why? Because some amount you withdrew after 6 months, some amount you withdrew after 9 months. So effectively during 12 months, what is the effective drawings? So 12 महीने लगातार हमने पैसा निकाला रहता, तो that is a 1750 रुपया। 1750 is during the year 12 months में you withdrew 6,000, or that is the different amount. But what is the effective amount that you withdrew during the year is called as effective. Effective means during 12 months, not during only 6 months, not for 3 months. During 12 months, it is effective. Yes. Sir, please, 6 number is thoda sa complete कर लेते। राम एंड रहीम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 and 30,000 ऑन 1st January 2019, एंड रहीम इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 400 पर मंथ। चलो चलो चलो, एंट्रीज फटाफट एंट्रीज बताओ, चलो चलो चलो। इफेक्टिव कैपिटल फर्स्ट एंट्री तो आ जाएगी। चलो पहला एंट्री मैं बता देता हूँ। राम बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू रहीम्स कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू रहीम्स कैपिटल। फर्स्ट एंट्री, बिकॉज दिस इज अ परमानेंट, इट इज रूटेड थ्रू कैपिटल अकाउंट थ्रू। राम इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, करंट अकाउंट थ्रू रूट करना, सैलरी करंट अकाउंट थ्रू। सो राइट डाउन ओवर देयर, सैलरी करंट अकाउंट थ्रू। एंट्री फास्ट एंट्री बताइए, 4,800 की एंट्री बताइए। चलो चलो चलो, फास्ट 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 एंट्री। यस उस्मान, लेता हूँ इलस्ट्रेशन 8 भी लेता हूँ, इसके बाद तुरंत इलस्ट्रेशन 8 लेंगे लास्ट के 5-10 मिनट। चलो चलो चलो, 10 मिनट्स ओनली, 10 मिनट्स पे, कीप पेशेंस। ओके ओके ओके, चलो सैलरी टू, वेरी गुड। जेवा ने आंसर दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट। चलो आगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स इज 6%। प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट्स इक्वली। ड्यूरिंग द ईयर राम विड्रू 8,000 एंड रहीम विड्रू 10,000। बेटा नाउ व्हेन ही विड्रू, वी विल एज्यूम आफ्टर 6 months. We will assume after 6 months. If nothing is mentioned, we will assume he withdrew after 6 months. Sir, this is a basic assumption. 6 महीने के बाद इज अ प्रॉपर एजम्पशन। 6 महीने के बाद, ये 6 महीने के बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसे बोलती है कि कभी भी डेट इज नॉट गिवन, यू हैव टू एज्यूम आफ्टर 6 months. सो 6 months का इंटरेस्ट चार्ज होएगा। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होएगा? 6 months का इंटरेस्ट चार्ज होएगा। हाँ तो ही विड्रू बेटा कितना अमाउंट? 8,000 and 10,000. So what is the entry? Ram's current account debit, Rahim's current account debit to bank 8,000 and 10,000, to cash to bank, कुछ भी लिख सकते हो। Then interest on capital. So I will show you the entries. Yes, bank account debit to, first entry understood, it's routed through capital account. Second entry, salary account debit to Rahim's current account. Yes, it is routed to current account. Then he withdrew the amount, Ram's current account, Rahim's current account. See, he withdrew the amount, and now interest on capital beta is expenditure. So राम का 50,000 के ऊपर 6% एंड रहीम का 30,000 के ऊपर 6%, एंड विड्रॉवल्स 8,000 into 6/12 effective into 6%. So 4,000 into 6% is IMP entry to interest on drawings. This is very very important entry, that interest on drawing is for 6 months. कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए होगा। Then beta, what is your P&L appropriation balance? $30,000 minus salary 4,800 minus interest 4,800 plus 540. Okay. 30,000, I will calculate it, minus
4,800 salary plus 540. So balance in P&L appropriation. Sorry, this is P&L appropriation, beta. 30,000 minus 9,600 plus 540. So 20,940, 10,770 and 10,470. Take a screenshot, beta. Fast journal entries का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट. Yes. You can take a screenshot. Do this homework, beta. Please write it properly in your notebook today only. And I know huge pressure on you. बहुत सारा प्रेशर है आपको. आज ये भी करना है. फर्स्ट कंप्लीट यूर, यस बेटा, राइटिंग पार्ट यू कैन डू इट आफ्टरवर्ड्स, बट फर्स्ट कंप्लीट यूर सेकंड चैप्टर के all illustrations. Try to complete it. So tomorrow session you will enjoy. Those questions which are difficult, I will take it in the class. P&L appropriation. And this is your capital and current account of illustration number 7. Yes, you can take a screenshot of this. Capital mein permanent amount only by cash, and in current account temporary transactions. All temporary transactions are routed through current accounts. Here you can write it's a permanent and current account temporary. And you can remember the pro forma: salary, interest on capital, profit. Whenever you are writing, please recall it. Salary credit में जाएगा current account के, interest on capital भी current में जाएगा, profit भी current account का balance बढ़ाएगा, drawings current account का balance कम करेगा, interest on drawing current account का balance कम करेगा. So it will reduce your current account balance and to balance carried down. खत्म, खत्म my friend, खत्म. And last illustration of the day, ILU 8. TYK 1-2 we will solve tomorrow. Okay, TYK 1-2 we will solve tomorrow. Please do practice, beta. Please. Today only you have to write it in the notebook. All screenshots that you have taken. ILU 3-4 का भी ले लो screenshot. If you want. ILU 3 का लो, चलो fast. Screenshot लेके रखो. You have to write it in your notebook. Promise me, sir, we are going to write it. No, beta, drawings is a temporary. Baraktulla ji, drawings every month temporary hota hai. So that's why it is routed through current account. अगर एडिशनल कैपिटल होता तो बेटा वो कैपिटल अकाउंट में ऐड हुआ रहता. एडिशनल कैपिटल कैपिटल अकाउंट. यस. नो बेटा, बरकतुल्ला जी नोट्स में नहीं अपलोड होगा. यू हैव टू डू हार्ड वर्क. मैं एवरीथिंग आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट ऑन नोट्स बेटा. प्लीज सॉरी फॉर दैट. ये सब चीजें आपको खुद से स्क्रीनशॉट लेके खुद लिखनी पड़ेगी. इलस्ट्रेशन 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं आपको हर चीज नहीं देने वाला हूं. कुछ आपको मेहनत करने दो. जो स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं उन्हीं को मिलेगा. वो लोग लेक्चर में स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे एंड दे विल टेक इट. यस, आप प्लीज डोंट फोर्स मी टू गिव एवरीथिंग इन राइटिंग.
यस एक्स्ट्रा कैपिटल आएगा तो बेटा कैपिटल अकाउंट, लीजा जैन कैपिटल अकाउंट में जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर, today's last question 8 number. Now your duty is to solve each and every illustration in your notebook. So beta please complete your notebook regularly. जो स्टूडेंट्स ये नोटबुक में नहीं लिखेंगे, those who are not writing it, बेटा at the time of revision you are going to face the problem. So screenshots लीजिए, नोटबुक में लिखिए, ट्राई कीजिए नेक्स्ट सेशन का एंड करके वापस आइए. आई नो 4 to 5 hours you have to devote. 1 hour for these 8-10 illustrations and 3 hours for goodwill adjustment. So goodwill के लिए 3 घंटे. So please give it. Please give it. You do not have any other option. In 30 minutes we have finished beta almost all illustrations. Yes. Please everyone write it in comment section. Sir, we are going to write it. Everyone. मुझे बताइए सर, प्रॉमिस वी आर गोइंग टू राइट ऑल 8 इलस्ट्रेशंस. कितना भी थक गए तो भी हम लोग 8 इलस्ट्रेशंस नोटबुक में लिखेंगे. ओके, परमानेंट एंट्रीज, विड्रॉवल एंड टेम्पररी एंट्रीज इन करंट अकाउंट. चलो अभी 8 इलस्ट्रेशन पे आइए बेटा, बिकॉज वी आई ऑल्सो हैव प्रेशर बेटा कि मुझे भी कंप्लीट करना ही है 7 days में. A and B are partners in sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C as a 1/6 share. Profit equally थे. Guaranteed profit not less than 2,50,000. Total profit 9 crores. Calculate share of each partner. C. I'm showing you the calculation. All profit A, B, C. All PSR. Old ratio 3/5, 2/5. New ratio. Now this is first calculation of new ratio. C को is getting 1/6 share. कितना शेयर मिला C को? 1/6. So out of 6 chocolate, C is getting 1 chocolate. Remaining chocolate 5/6. 6 में से 1 chocolate चला गया, बचा 5. So out of 6, 1 chocolate is given to C. So 5 chocolates are remaining. That will be divided in the ratio of 3:2. किसमें डिवाइड करेंगे? 3:2. So 15/30, 10/30, and here 5/30. So new ratio 15, 10, 5. 15:10:5. Answer is correct because total is 30. Total 30 आना चाहिए. So out of 30 chocolates, 15 is with A, B के पास 10 and 5 C के पास. Can I write it as 3:2:1? Yes. So new ratio is 3:2:1. 15:10:5. That is 3:2:1. So new ratio, we got new ratio 3:2:1. Now, what is the total profit? 9 crore. Total profit 9 crore. Out of this, 1/6 is 1,50,00,000. To whom it is getting beta? 1,50,00,000. C. हाँ, so what is the answer? नहीं तो हमारा कैलकुलेशन हो गया है 9 crores. लास्ट के 5 zeros उड़ा दो. रुपीज इन 10,000. रुपीज इन 10,000. ओके, लास्ट के 5 zeros उड़ा दो. 900 रुपया. दैट विल बी इजी फॉर यू. 900 we will divide it in the ratio of 3:2:1. So 900 divided by 6 into 3 is equal to, so 450. लास्ट में 5 zeros ऐड कर देना बाद में. 2 is equal to 1 is equal to.
So correct answer is 450 is to 300 is to 150. Now minimum guarantee 250. Now see, minimum guarantee 250. So he must get 100 rupees extra. Who is giving that guarantee? 100 rupees guarantee by firm. फर्म गारंटी दे रहा है 100 रुपीज का, तो ए और बी में से 3:2 रेशियो में 100 रुपीज कटेगा. वी विल डिडक्ट इट फ्रॉम दिस 100 रुपीज एक्स्ट्रा. 250 इज अ मिनिमम अमाउंट. करेक्ट है? करेक्ट है. सो नाउ इफ गारंटी इज गिवन बाय फर्म, guarantee is given by firm. See, A, B, C, 450, 300, 150. Correct है? 100 rupees he will get extra to get 250. Guarantee is given by firm. तो ये क्रेडिट होगा और ये दोनों पार्टनर को डेबिट होगा. In which ratio? 3:2. 3:2 is their old ratio. So firm is giving guarantee means 3:2 ratio. तो 100 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3:2 रेशियो में 60-40. सो माइनस होगा ये डेबिट मीन्स एंड इट इज एडेड. सो न्यू रेशियो विल बी 390, न्यू अमाउंट 260, 250, टोटल इज 900. Total 900 and it is 0. 390, 260, 250. So 900 is a total. You can check the answer. 390, 260 and 250 is the correct answer. Second one, guarantee is given by A. Okay, so same chart. Guarantee is given by A. So here I will change by A. So B को dash and 100 debit for A only. So correct answer is 450 minus 100 debit means 350, 300, 250. So correct answer is 350, 300 and 250. Check the answer. 350, 300 and 250. Last is guarantee is given by A and B equally. Equally guarantee दिया तो A में से 50 जाएगा, B में से 50 जाएगा. So A's answer is 400, 250, 250. Total is 900. Yes, 450, 250, 250. 400, sorry, 250, 250. So this is how, yes, I will show you my presentation. I will show you my presentation. You can check the presentation, beta. Yes. Yes, you can check. 450, 350, 150 is the correct answer. Calculation of new ratio I have done. It's a as per share. You can take a screenshot. Then yes, I have not reduced all zeros. I have kept these zeros. You can reduce rupees in 10,000. You can write. This is guaranteed given by firm, guarantee given by A and guarantee given by A and B. Yes, beta sahi hai ma. Now it's easy, beta. Sahi hai ma ji? Abhi easy hai. Yes. सही है माजी. Now it's easy. Take a screenshot. Complete it. Profit is less than interest on loan, beta, then don't pay. Next year you can pay it. Okay, chalo. So I hope you enjoyed till now.
TYK 1-2 are also difficult one that we are going to solve it tomorrow. So up to illustration 8, I have solved all illustrations. Tomorrow I am going to give you index of this 130 तक का सेशन रहेगा, because पार्टनरशिप मुझे आपका बिल्कुल भी कमजोर नहीं रखना है, but at the same time you have to solve all these illustrations in your notebook. And now it's time to give a break. So break के बाद हम लोग मिलेंगे कल, तुरंत हम लोग मिलने वाले हैं कल. So enjoy and complete your homework. Don't worry, partnership easy છે. Thank you.